So a particle is in equilibrium. So the critical thing that we need to underline is it is in equilibrium on a smooth horizontal table when acted on by three horizontal forces as shown. So what is the meaning of this word equilibrium? Let us compare this with the previous question that we have done. And then you'll understand that what is the meaning of the word equilibrium and why that word equilibrium is very critical for us. The previous question that we did was three coplanar forces. Find the magnitude of the resultant of the three forces. Now, I'll continue with the example that I had taken in the previous question. So, previous question was that Miss Avantika is being pulled in three sides by her cousins. So, cousin 1, cousin 2, cousin 3. So, we had to find the resultant of the three forces. That was the previous question. But in this question, so in the previous question, we had to find the resultant. That was case 1. But in this case, case 2, what they are saying is that Miss Avantika is in equilibrium. Do you see the difference or not? Are you guys able to see the difference, Dhruti? Miss Avantika? No, sir, I'm still not understanding. Okay. So when we have to find the resultant, what it means is that this force, and this force would have some force which would be the result of these three forces. Are we clear about this? Okay. That these three forces can be replaced by a single force which would be pointing in a certain direction. Are we clear? Yes. But if the three forces, when they are acting, they are in equilibrium, what it implies is that the result of the three forces would be zero. Are we clear about this? Let's try to understand this again. Do you see TV in your living room? Yeah. अभी वो जो टीवी है वो दीवार पे लगा हुआ है. Do we agree to this? Yes. Ms. Avantika, are we clear about this? Yeah. वो जो टीवी है वो इक्विलिब्रियम पे है. Do we agree to this? वो हिल तो नहीं रहा. No movement. Do we agree to this? Ms. Avantika, are we clear about this? Ms. Dhruti, are we clear about? Ms. Dhruti, are we clear? Yes. But does it imply that there are no forces acting on TV? Does it imply this? Forces तो लगी रही होंगी. जो टीवी है उसका वेट नीचे की तरफ होगा. Then it is being supported by a handle which is on the back side. Do we agree to this? तो इसका वेट अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो जो हैंडल है वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा. डू वी एग्री टू दिस वन? दैट इज व्हाई द टीवी डजंट मूव. Ms. Ruti, have you understood this or is it confusing? I have understood, sir. Ms. Avantika? Understood. Let's take a simple example. So you guys are sitting on a chair. नीचे है. जो चेयर है वो आपको ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रही है तभी तो आप स्टैटिक यहाँ पर बैठे हुए हैं. नहीं तो आप नीचे गिर जाते ना. आर वी क्लियर अबाउट दिस? Correct. No, sir. What I'm trying to tell you guys is equilibrium. Does equilibrium mean absence of force? Or let me call it absence of forces. Does it mean this? Ms. Avantika? Yeah. Arey nahi. This ball can be in equilibrium.
though there would be three forces acting on it, it can still be in equilibrium. I said yes when you called me if I was there. Have you understood the concept or not? Yeah. So this ball might be in equilibrium, but does it imply that there are no forces acting on it? No, that is not the case. No. What it implies is that the resultant of the three forces is equal to 0. Are we clear now, Ms. Ruti? Yes. अरे आपकी क्लास में एक लड़का है यार, लड़का है लड़की है जो भी ले लीजिए, लड़की ले लीजिए. So this girl seems very calm, very peaceful, very nice. हाँ, अच्छी लड़की है. So doesn't imply कि she has no troubles, Ms. Avantika? No. ऐसा तो नहीं होगा. अभी Of course she will have troubles. Of course she will have. Forces तो लगी रही होंगी यार. हो सकता है 3 ना, हो सकता है उसको 10 फोर्सेस लग रही हो. बट अब उस लड़की ने क्या किया, जो इक्विलिब्रियम पे है वो इसलिए इक्विलिब्रियम पे है बिकॉज जो नेट फोर्स है दैट इज 0. आर वी क्लियर अबाउट दिस? Yes. अरे एक्सटर्नल वर्ल्ड है यार, लेट अस टेक इट ऑन अ वेरी फिलोसॉफिकल लेवल. देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन मिस अवंतिका, बट उनकी जो इंटरनल फोर्स है उसकी वजह से वो जो नेट फोर्स है दैट इज 0. आर वी क्लियर नाउ? Yes. सो इस वजह से मिस अवंतिका, I've understood. इस वजह से मिस अवंतिका सीम्स वेरी चीयरफुल, बट ऐसा नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, वो इक्विलिब्रियम पे है. एक्सटर्नल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो गया. सो आफ्टर दिस philosophical question, let us crash back to physics. तो फिर से देखिए, a particle is in equilibrium. Now have we understood the meaning of equilibrium? Yes. So your mom or dad might be in equilibrium. ठीक है, they look very peaceful, but it doesn't imply कि उन पे कोई forces नहीं लग रही. What all it implies is कि the net force that is acting on your father or your mother, उसका जो net force जो है वो 0 हो गया. It doesn't imply कि force is 0. So a particle is in equilibrium on a smooth horizontal table with when acted on by 3 horizontal forces as shown. तो 3 forces बेटा लग रहे हैं, और जो net हाँ. equilibrium. Oh, okay, समझा मुझे. हाँ, if it's in equilibrium, the net force will be 0. Okay, I finally understood. हाँ, thank you, sir. तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई ऐसा नहीं है कि उसके कोई लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है. मैं पार्टी चल रही है सर, आपसे मैं लाइव एकदम नॉन स्टॉप पार्टी, ऐसा नहीं है. उसका जो नेट फोर्स वो 0 है. Now we will be using this the same statement when we are doing laws of motion. उसमें ना ये ऐसा करके लिखा रहेगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 ऐसे करके ना आपकी बुक में लिखा रहेगा. वो जब आएगा मैं आपको दिखा दूंगा. बट when they say sigma f is 0, what it says is the body is in equilibrium. Mr. Avantika, are we clear? Yeah. अभी आपका फोर्सेस का चैप्टर चालू होगा, वो बहुत कंफ्यूजिंग है. बेसिकली हमारी फोर्सेस के चैप्टर की ही प्रिपरेशन चलती है. नेक्स्ट चैप्टर उसमें ना ऐसा लिखा होगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है. जरूरत ही क्लियर? कैन वी गो अहेड? Yes. तो अभी फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक पार्टिकल है, उसमें 3 फोर्सेस लग रही हैं और उसका जो रिजल्टेंट है दैट रिजल्टेंट जो है वो 0 है. तो with the information that we have now and the previous information that we have how to deal with vectors, there's a easy way of doing this question. So what I do is, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, इसका मैं रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ. आर वी क्लियर? Okay. मुझे पाइथागोरस आती है तो मैं बोलता हूँ कि ये 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होगा. बच्चे बनती है. आर वी क्लियर? Yeah.
तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो √65 होगा. न्यूटन, आर वी क्लियर? Yes. Yes. Just give me a moment. So the resultant of these two forces, 4 Newton, 7 Newton, would be a force whose magnitude is √65. Are we clear about this? Ms. Dhruti, are we clear about this? Yes. Then of course we can find this angle alpha also. How can we find this angle alpha? The tan alpha would be equal to 4/7, and I can calculate the value of alpha using calculator. Are we clear? Huh. So basically, what we have done till now is that I have replaced college order. Khana khao college. I have replaced this force and this force by a single force of √65 Newton and a certain angle which I can calculate, which is pointing in this side. Are we clear? Yes. Yeah. Do you guys have a calculator? Can you tell me what is this angle? If you calculate 4/7, just use your calculator or use your mobile to find the angle. Were you able to find the angle? Ms. Avantika? I don't have a phone with me. Okay. So it is 29.74 degrees and I'm assuming it to be 30 degrees. Ms. Okay. Ruthia, Okay. are we clear? Yes. I hope it is clear to you कि ये जो force लग रही है, this force should be equal and opposite to this force so that the result, are we clear? इस फोर्स को भी √65 न्यूटन होना पड़ेगा और इस एंगल को भी 30 डिग्री होना पड़ेगा. आर वी क्लियर अबाउट दिस और नॉट? Yes. मिस अवंतिका, Yes. is it clear? Are they like Yeah. perfectly opposite to each other? Yes. Okay. Okay. They have Understood. to be. There is an external force acting on you. अभी आपकी इंटरनल फोर्स अगर उसको मैच कर सकती है तभी तो आप इक्विलिब्रियम पे रहेंगे. नहीं समझ में आया? हाँ समझा मुझे. Since it is in equilibrium, they have to be opposite. इक्वल एंड अपोजिट उसको होना ही पड़ेगा. Okay. मिस अवंतिका, आर वी क्लियर? Yes. So basically what I'm trying to tell you guys is that there are two concepts that you need to understand. इसी की हमने 2 क्वेश्चंस किए. 2 क्वेश्चन हमने किए. एक हमने ये क्वेश्चन किया कि यार ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये तीसरा फोर्स है. You have to find the resultant. Resultant applies that there is some force. That was case 1. So these 3 forces can be replaced by a single force, which would be a resultant of the 3 forces. ये case 1 है. And then we did a case 2. जिसके हिसाब से ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है. The 3 forces are in equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 फोर्स है. आर वी क्लियर? Yes. Because the object is in equilibrium. Ms. Dhruti, are we clear? Yes. Let me give you a practical example so that you understand it well. So, abhi winters will start. So you will have all these merry-go-rounds. Have you ever rode on a merry-go-round? ऐसा ही लगता है वो, ऐसा कार्निवल में. Miss Avantika, are we clear? Yes. अभी आप यहाँ बैठे हैं और बढ़िया आप मतलब घूम करके you took a 10 minutes ride and you came back. Miss Avantika, are we clear?
Yes. This is because all has gone well. Are we clear? Okay. Yeah. If you want some adventure, maybe you could have flown from this merry-go-round. Ms. Avantika, are we clear? Yes. So if this was a happy case where all went well, at every point you were in equilibrium. Are we clear about this or not? आप पे जो नेट फोर्स लग रही Yes. थी, जो नेट फोर्स लग रही थी, वो 0 लग रही थी. इसीलिए आप वापस आ गए. किसी भी पॉइंट पे अगर आप पे कोई फोर्स लगती जिसका रिजल्टेंट 0 से ज्यादा होता, तो यू वुड हैव लाइक फ्लोन आउट. मिस रुति, आर वी क्लियर? Yes. और एग्जांपल ले लीजिए. So because I'll be using all these examples when we are doing this न्यूटन का मिस्टर न्यूटन का जब चैप्टर करेंगे तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो आई वांट यू टू कंसेप्चुअली बी रेडी फॉर दैट चैप्टर. आप बस में बैठे हैं और बस चल रही है बढ़िया, मतलब आप आराम से शांति से बैठे हो, ठीक है. अब सडनली द बस ब्रेक्स. So when the bus applies brake, Miss Avantika, are you in equilibrium at that moment? No, technically, if she is in the bus, that means she's also moving at the same speed. Okay. Now, just listen to what I'm saying and try to think. जो बस चल रही है, that is moving at a constant speed. रुति, constant speed Okay. में, बढ़िया constant speed पे चल रही है. तो she will be in the same position. Are we clear? Yeah. But let us assume. So एक simple example लेते हैं, ऐसे simple example लेते हैं, so that you understand it well. Okay. This is how Avantika is standing in the bus. अभी वो constant speed पे चल रही है. हाँ. Okay. अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो बस है that applies a brake, उसको ब्रेक लगाया उसने. So will she keep standing? No, she'll move a little to the right because she was in motion. इसका मतलब क्या Like हुआ? inertia? I'm sorry. Inertia, na? Okay, wait, I'm getting confused. Yes. No. You're absolutely fine. कहाँ गिरेगी? राइट की तरफ गिरेगी या आगे गिरेगी? पीछे? Right. राइट ही गिरेगी? हाँ. राइट ही गिरेगी. अब मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि केस 1 में when the bus was moving at a constant speed, she was in equilibrium because net force was 0. Case 2 में Correct. when she has moved, the equilibrium has got broken. Are we clear about this? We understood the concept? Yes. Yes, understood. So forces में आपके पास 2 तरह के केसेस आएंगे, जिससे इस कंसेप्ट को लेके हम काफी चीजें समझने वाले हैं. वन कंसेप्ट इज कि देयर इज सम रिजल्टेंट, और दूसरे केस में द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. एंड वी शुड बी वेरी क्लियर कि व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हाट इट इंप्लाइज इज कि जो नेट फोर्स उस पर लग रही है, उसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट फोर्स 0. ऐसा नहीं कि फोर्स 0. So one thing, are we clear? Yes. Miss Jyoti, are we clear? Yes. Okay. So